Today we are going to complete the previous chapter, that was using of keyboards. Spacebar keys, computer parts, right? How many parts are there in the computer keyboards? We'll learn about the special keys today. Okay, now see, what is this? This is a spacebar key. It is the longest key on the keyboard. This is the longest key on the keyboard. Enter key, enter key. This is to press, when we press the enter key, when we have to move our cursor to a next line. Computer keyboard, space bar, right? The space bar is the key to add a blank space between letters, words, and numbers, and it is the longest key on the keyboard. To type my bag with the space in between the two words, we will press which key? Space bar. So, like if I have to type my bag, then what will I do? I will I will type my, then I'll press this longest key that is called space bar, and then I'll write bag. So there will be space between my and bag. So this is how, and this is why we use space bar to give a gap between words. Okay. That is, next is enter key. Enter key is pressed to jump the cursor to the next line. जब हम जो ब्लिंकिंग लाइन है ना उसको हम कर्सर बोलते हैं. जब हम इस कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए जब यूज करते हैं क्या यूज करते हैं? एंटर की यूज करते हैं. There are two enter keys on a keyboard. There are two enter keys. To, like there is one enter key on with the numeric pad, and there is a second number key with the alphabetical tabs. So to type tree and fruit in a separate line, press this key. अगर हमको tree और fruit अलग अलग लाइन में लिखना है, हम क्या करेंगे? जैसे हमने फर्स्ट लाइन में लिखा tree, फिर हम enter को प्रेस करेंगे, then we will write fruit. और फिर अगर हमको हमको और भी कुछ लिखना है न्यू लाइन में, तो वापस हम एंटर यूज करेंगे. हमको जितनी बार न्यू लाइन यूज करनी है उतनी बार हम एंटर को प्रेस करेंगे ताकि हम न्यू लाइन से लिखना स्टार्ट कर सकें. यू कैन सी दिस इज एरो कीज, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. सो इफ यू हैव टू मूव अप, पेज को ऊपर ले जाना है, पेज को नीचे लाना है, लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, तो we will use this key arrow keys. Backspace key. Backspace key जब हमारे वर्ड का लेफ्ट साइड में हमको कोई लेटर डिलीट करना है तो हम उसके लिए बैकस्पेस की यूज करते हैं. ठीक है. डिलीट की कब यूज करते हैं? जब हमको वर्ड में लेटर्स में से राइट साइड का वर्ड डिलीट करना है तो हम डिलीट की यूज करते हैं. नाउ इन detail we will read now. You can move the cursor up, down, left and right on the monitor using the arrow keys. The directions are marked on each arrow key: up, down, left, right. Backspace key. The backspace key is used to erase anything typed to the left of the cursor. It erases one letter at a time. For example, to correct the spelling of computer. So here the spelling is COMPUTTER, computer. So spelling को correct करने के लिए हमको इसको computer लिखना है. तो what will we do? We will follow these steps. हम cursor को कहाँ place करेंगे? हमारा जो second T है उसके left में press करेंगे, right? Second T के बाद में after second T we will put the cursor. फिर press करेंगे backspace key, then we will press the backspace key और the extra T is erased. Now extra T जो है वो erase हो जाएगा. Similarly delete key है. The delete key is used to erase anything typed to the right of the cursor. जो भी कर्सर के राइट में हमने टाइप किया है गलत, उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट की यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ यूनिफॉर्मली. Here what is the spelling? Uniformly. UNIFORME. To make it uniform,
We will follow the simple steps. Place the cursor before E. जो हमको remove करना है E, उसके before हमने cursor को put किया. Press the delete key. फिर हमने delete key को press किया and then the E is erased. Okay. Okay, just let's review. हम जल्दी से फटाफट recap कर लेते हैं. ठीक है. That is, I let you jump to the next line. कौन सी कीज हैं? कौन सी की होती है जो नेक्स्ट लाइन पे ले जाती है हमको? That is enter key. We allow you to move in different directions. That is called direction keys. है ना? Pressing me at blank space. Blank space कहाँ कैसे आती है? Space bar से. We work like an erasers. इरेजर्स की जैसे कौन कौन सी टू कीज यूज होती है हमारी? एक होती है बैकस्पेस की और एक होती है डिलीट की. राइट. टिक द करेक्ट आंसर. व्हिच ऑफ दीज erase anything type to the left of the cursor. लेफ्ट ऑफ द कर्सर को डिलीट करने के लिए हमको बैकस्पेस की यूज करते हैं. क्या यूज करेंगे? बैकस्पेस. Which of the following is not an alphabet key? B is alphabet, K is also alphabet. Enter key is the right answer. The erase anything it typed to right of the cursor. Anything which is typed right to the cursor, अगर delete करना है, you have to erase, then we have to use which key? Delete key. Fill in the blanks. The dash is the longest key on the keyboard. कौन सी की होती है? That is space bar. The dash is the small blinking line. एक small blinking सी line जो चमकती है उसको क्या बोलते हैं? That is called cursor. The buttons pressed on keyboards are called keys. There are 26 dash keys on keyboard. कौन सी होती है 26? Can you tell me? Yes, that is alphabet keys. Alphabet keys होती है ना 26 alphabets होते हैं. Right. Right. T for true and F for false. A standard keyboard has 204 keys. No. False. Number keys are also known as numeric keys. True. You can type with a monitor. No, we type with a keyboard. Alphabet keys are used to type letters, words, and sentences. Yes, true. Rearrange the jumbled letters to form the correct words. BAKC that is backspace. NETER enter ENTER. Spacebar ABRSACPE that is spacebar. SPACEBAR. UMBNER that is NUMBER number. Okay, that's all for today. Thank you.